Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again on the YouTube channel of 𝐈𝐏𝐻𝐿 Wallah, live once again in our next session for 𝐈𝐏𝐻 Foundation. So friends, a very good evening to all of you. Hello Kavya, hello Ruchi, hello everyone. So can you please quickly confirm if I'm clearly visible and audible so that we can begin this lecture? फटाफट से जल्दी से confirm कर दो all the students who are right now in this session. Hello everyone. Moonchild, hello. So जो भी students अभी इस session में हैं जल्दी से please एक बार confirm कर दो. Kavya, hello, yes, all right. So Kavya has confirmed that everything is fine with the tech. Okay. So guys, foundation batch, आपको पता है ये batch क्यों start हुआ है? 𝐈𝐵MAT 2026 जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस बैच इज स्पेशली डिजाइन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे हो क्या रहा है? प्रीवियसली इन द टू लेक्चर्स लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स, दो लेक्चर्स हुए हैं. In the previous lectures we have covered the basics of linear and circular arrangement. So the students who are weak, who are not that strong, below average in the understanding of logical reasoning or data interpretation, they can join this batch and they can keep attending the lectures in this batch. Now joining the batch does not mean that you'll have to pay a fees. So these classes are conducted on YouTube फ्री ऑफ कॉस्ट. तो YouTube आप अपने फोन में ओपन करो, लैपटॉप पे ओपन करो, डेस्कटॉप पे ओपन करो, कहीं पे भी ओपन करो YouTube. You just need a good internet connection to be a part of this batch, right? So friends, we'll continue with this batch, the 𝐈𝐵MAT Foundation 2026 batch, right? With our next topic, that is series. अब भाई series के questions, what is the importance? अरे ये क्या पूछा सर, अभी DPP सॉल्व कर रहा था कि लास्ट के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं. अरे अरविंद थोड़ा सा और फोकस करो, लास्ट के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं. सो एक बार बता दो कौन से चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? एंड आई गिव यू अ ट्रिक बिहाइंड दैट. ओके अरविंद, चलिए. सो नाउ इन टुडेज क्लास विल बी लुकिंग एट द वेरी बेसिक्स ऑफ सीरीज. नाउ सीरीज में किस किस टाइप की सीरीज होती है, हाउ वी कैन सॉल्व दो सीरीज, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज लेक्चर एंड देन विल बी लुकिंग एट सम ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चंस ऑन सीरीज, राइट? अब सीरीज का इंपॉर्टेंस कौन कौन से एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है. सो यू मे नॉट फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ सीरीज इन 𝐈𝐵MAT इंदौर, ठीक है, बट 𝐈𝐵MAT रोहतक एंड 𝐺IPMAT एग्जाम, ये दो एग्जाम्स हैं जिनमें यू विल डेफिनेटली सी क्वेश्चंस ऑफ सीरीज. Now series can be of different types. अब देखते हैं series के types क्या क्या हैं. So let's have a look at those things. All right. But before looking at the basics, friends, आप लोगों के लिए एक बहुत ही important announcement है. So the announcement is here. So we are celebrating our 2025 students. We are celebrating the students. We are celebrating the results of all these students on coming Saturday. So friends, 5th of July is the day we have decided to invite all the achievers of all the students who have joined us in 𝐈𝐵MAT 2025 batches, right? Now these students have secured very good marks in the written test and some of them have got a final admit in whatever results, whatever final selection, whatever final results are out, right? So we have invited all these students and we are inviting all of you to be a part of our YouTube channel, right? So like I want each and every student who is preparing for 2026 to be a part of this celebration on coming Saturday, that is 5th of July at 7 PM on our YouTube channel here only. So जिस YouTube channel पे अभी हो, same YouTube channel पे 7 PM on 5th of July will be celebrating these results, right? So I want to see each and every student in that session, ठीक है? And ऐसा नहीं है कि like this celebration will revolve around the students of 𝐈𝐵MAT 2025. No, there will be some surprises for all of you as well, right? So be a part of this session and there will be surprises for you. All right, great. So let's have a look at the types of series. So let's begin this session. Okay. Kavya,
अभी नहीं, अभी तो बहुत बेसिक्स हैं सीरीज के, बट डेफिनेटली आपकी क्लासेस जो है वहां पे मैं बताऊंगा कि रॉन्ग टर्म फाइंड आउट कैसे करते हैं। सीरीज में 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नॉट टुडे, टुडे वी आर लुकिंग एट द बेसिक्स ऑफ सीरीज, राइट? ठीक है, चलिए। All right. Now, friends, if I talk about the types of series, we have primarily 3 types of series: number series, alphabetical series, and the series in which you will find both numbers and alphabets, that is alphanumeric series, right? Fine. So alphabets bhi hai, numbers bhi hai. So you will have alphanumeric series, you have number series, alphabet series. अब अगर मैं लॉजिक्स की बात करूं, कंसेप्ट्स की बात करूं, हाँ, so in all the questions of series, like if it is a type of number series or alphabetical series or alphanumerical series, irrespective of the type of series, the concepts, the logics used are similar. All right, ठीक है? तो similar से ही logic use होते हैं. Now based on the concept used in the questions of series, we have in general these 3 type of concepts. But before looking at these 3 concepts, addition, multiplication or miscellaneous logics, we must know a few things. कुछ चीजें पता होनी चाहिए हमें, right? So I'll tell you what all things you need to know before you enter the questions of series. ये चीजें बहुत ज़्यादा important है, right? So let's talk about these things one by one. So number 1, you should be knowing about different type of numbers. So different type of numbers as in even numbers, odd numbers, prime numbers, and composite numbers. Right? Now, how many of you know about all these types of numbers? Quickly write yes in the chat box. Come on. All right, Ruchi says yes. Arvind, Kavya, nice. All right, so you guys know about these type of numbers, even and odd numbers to start with. Even numbers like 0, 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. So these are even and odd numbers. All of you must be knowing about even odd numbers. प्रॉब्लम कहाँ आती है? थोड़ी बहुत प्राइम नंबर्स में. So can you tell me what are prime numbers? Or give me some examples starting from the smallest prime number. Write 3 or 4 prime numbers the way I have done this. Come on. Yes, Ruchi, number systems में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, right? So कभी मैं इसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ. I'm just being sure that you all know these things. Ruchi, I am talking about prime numbers and I have told you to write the smallest prime number and then the other prime numbers in increasing order. So Ruchi, what is the smallest prime number? So smallest prime number is not 3, the smallest prime number is 2. Now prime number by definition is a type of number which has 2 factors. ऐसा कोई भी नंबर है जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो नंबर प्राइम होगा, ठीक है? So if I'll write prime numbers, I'll start with 2, 3, 5, 7. Wait, I'll write it again. So writing all the prime numbers 2, 3, 5, 7, 11. 9 is not a prime number. 13. 15 is not a prime number, 17 and so on, right? So all these numbers are prime numbers starting from 2. Now for 2 we can say that 2 is the smallest prime number and 2 is the only even prime number. Properties देखने की जरूरत नहीं है, सीरीज के क्वेश्चंस में वो काम नहीं आएगा. You just need to identify which set of numbers are even, odd, prime and composite, right? अब अगर composite numbers की बात की जाए तो what are composite numbers? What are composite numbers? By definition अगर मेरे को देखना है, so ऐसा मत बोलना कि जो नंबर प्राइम नहीं है वो composite होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं, right? So composite numbers are those numbers जिनके 3 फैक्टर्स होते हैं या फिर 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं. So all those numbers
which have more than 2 factors are composite numbers. More than 2 factors बोला है तो 3 या 3 से ज्यादा factors होने चाहिए. I can say that they are composite numbers, right? Now if I'll start writing the composite numbers starting from the smallest composite number, it will be 4, right? 4 is the smallest composite number. 4 के बाद 5 तो prime हो गया. So I'll write 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 and so on. So all these numbers are composite numbers, right? ठीक है. दो ये नंबर सिस्टम्स की क्लास नहीं है, स्टिल मैं बता देता हूं. 1, अगर मैं 1 की बात करता हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि भाई 1 प्राइम नंबर होता है या कॉम्पोजिट नंबर होता है, राइट? सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन. ठीक है. सो बिकॉज ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल दोज नंबर्स हैविंग 2 फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स. कॉम्पोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल दोज नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. ठीक है. अब 1 बेचारे के कितने फैक्टर होते हैं? 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है. प्राइम नंबर बनने के लिए इसको 2 फैक्टर्स चाहिए. कॉम्पोजिट नंबर बनने के लिए इसको 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, बट इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है. सो दैट्स व्हाई दिस इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. Okay, so 1 is neither prime nor composite. Okay, fine. ठीक है, great. Now Renu, is IPMAT Pro good? Yes Renu, यार IPMAT Pro बहुत ही अच्छा बैच है यार. हाँ, so there are some students here who have already joined IPMAT Pro. You can also be a part of that if you are looking for the feedback in order to join that batch. So yes, definitely you can come in that batch. Okay. So these are certain things that you need to know before actually entering to look at the concepts of using which you can solve the questions of series. ठीक है? Now let's go back to the previous slide and look at the different ways, the different concepts that are applied in a series. Right? Now first concept here that you can see is addition logic. Okay? Now, addition logic, I'll write an example. You will easily understand that. ओके, सो मैं एक सीरीज लिख रहा हूं. लेट्स से 13, 17, 21, 25, 29, 33. What will be the next number? What will be the next number in this series? So I'll repeat the series: 13, 17, 21, 25, 29, 33. What will be the next number in this series? Absolutely correct. Nice. So the next number in this series should be 37. Why? The logic. Here, the difference between these two terms is 4. Again, the difference is 4. Again, the difference is 4. And in every case, the difference is 4. So we can say that any number is increased by 4 to obtain the next number. Right? Okay, so we can say that this is a kind of addition series in which the same number is being added to the previous term to generate the next term. तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखा? 4 ऐड हो रहा है. So 33 में 4 ऐड कर देंगे and the answer will become 37. Alright? ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं. So let's say the series is, all of you focus on the next one. Let's say the series is 6, 7, 9, 13, sorry, 6, 7, 9, अभी 13 बाद में देखेंगे. So 6, 7, 9, 12, 16, 21. What will be the next term in this series? Absolutely, Renu, you were absolutely correct. As far as the logic behind the first question is concerned, definitely give me the answer for the second question. All right, so 2 different answers. Ruchi says 26. Now Ruchi ने ही 2 अलग-अलग आंसर दिए हैं.
Now one answer is 26, another answer is 27, and Mangal says 25 is the answer. So 25, 26, 27 तीन different answers हैं. चलो चेक करते हैं लॉजिक. ना यहां पे डिफरेंस कितना है? 1 2 3 4 and 5. Now would you like to change your answers? जिसने भी कुछ ऐसा लगता है कि गलत आंसर दिया है. The difference in the first case is 1, then 2, then 3, then 4, then 5. So in the first case, the term is increased by 1, then 2, then 3, and so on. Now, how is it different from the first question? In the first question, the difference was constant, same everywhere. Okay, so the same number was being added to generate the next number in the first question. But इस वाले question में क्या हो रहा है? यहां पे सेम नंबर ऐड नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर्स ऐड हो रहे हैं, बट ये जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं दे आर फॉर्मिंग अ सीरीज इन इटसेल्फ. तो यहां पे सीरीज क्या है? 1 2 3 4 5, बहुत ही बेसिक सीरीज है. तो यहां पे नेक्स्ट नंबर टू फॉलो शुड बी 6. सो 21 प्लस 6 आंसर शुड बी 27, राइट? ठीक है ना? सो सिंपल आंसर 27 इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट वी आर लुकिंग एट हियर इज कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, एंड जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं वो अपने आप में कोई ना कोई सीरीज फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है? नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज. नाउ अदर देन इवन, ऑड, प्राइम एंड कॉम्पोजिट, you must know a few numbers as well. So the second thing here that you must know, is, मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, perfect squares and perfect cubes. Okay, now perfect squares and perfect cubes ये टिप्स पे होने चाहिए. अब कहां तक? कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना. तो स्क्वेयर्स अप टिल 25 एंड क्यूब्स अप टिल 15, ये याद होने चाहिए. सो जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मेरी सीरीज की क्लास अटेंड कर ली है बैच में, क्विकली टेल मी 25 तक के स्क्वेयर्स एंड 15 तक के क्यूब्स याद है, यस या नो? ये मत लिखना कि मुझे सर 20 तक याद है, 15 तक याद है, क्यूब्स 10 तक याद है. नहीं, जस्ट गिव मी अ सिंपल आंसर इन टर्म्स ऑफ यस और नो. डू यू नो ऑल दीज थिंग्स? कम ऑन, टेल मी yes or no. So Moonchild says yes. So Moonchild, that means you know all the squares up till 25 and all the cubes up till 15, right? ठीक है? Come on people, yes लिखो. अगर yes नहीं लिख पा रहे हो तो no लिखो. Come on. I just want to see कि कौन कितने पानी में है. So Arvind, Renu, Ruchi, Kavya, I'm talking to all of you, all the students who are present in the class. Nice, good. So मेरे दोस्त अरविंद, आपने नो लिखा है, तो दोस्त मेक श्योर दैट यू टेक 2 to 3 days एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स. ठीक है? अब एक सबसे अच्छा तरीका होता है इनको याद रखने का. ठीक है? आप क्या करो, एक शीट ऑफ पेपर लो, उस पे सारे नंबर्स लिखो और उनको रटना शुरू कर दो. सो यू विल डेफिनेटली लर्न देम इन द नेक्स्ट 2 hours. ठीक है? एंड फिर उस शीट को रख दो कहीं पे भी. डन. अगर ये चीज करोगे, सो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू लर्न देम इन द नेक्स्ट 2 hours और बाय टुनाइट और बाय टुमारो मॉर्निंग. बट उतनी ही जल्दी आप भूल जाओगे. ओके, सो दिस इज नॉट द वे. द राइट वे ऑफ रिमेंबरिंग दीज थिंग्स इज राइट देम इन अ शीट ऑफ पेपर, राइट देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एंड उस पेपर को कहीं पे भी अपने रूम में पेस्ट कर दो. अपनी स्टडी टेबल के आसपास, अपने जिस बेड पे सोते हो उसके आसपास, अपने वॉशरूम के अंदर, कहीं पे भी पेस्ट कर दो और आते जाते उसको 1-2 बार रिवाइज करते रहो. ठीक है? एंड यू विल बी एबल टू लर्न देम, यू विल बी एबल टू रिमेंबर देम. ठीक है? सो यूज दैट सेकेंड मेथड. फाइन. सो अरविंद, आज नहीं कर पाओगे शायद सारे के सारे नंबर्स याद, बट जो मैंने मेथड बताया ना उससे आप याद भी कर पाओगे एंड रिकॉल भी कर पाओगे. ओके, चलो. सो perfect squares up till 25, perfect cubes up till 15. Now let's see how they can be used, right? So next series में बना रहा हूं यहां पे, focus here. 11, 12, 16, 11, 12, 16, 25, 41, and what will be the next number?
नाइस रेनू, वेरी गुड। रेनू देखो, सी रेनू, आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लेवल एट विच यू आर सिटिंग एट, कि आप क्वांट में कितने अच्छे हो, रीजनिंग आपको कितना समझ में आता है, वर्बल आरसी कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव जॉइंड एनीवेयर, पीडब्ल्यू का कोई भी बैच ज्वाइन कर लिया है, आईपी मैट का बैच ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ मटेरियल को आप खुद से सॉल्व करो और आपका पेपर क्लियर हो जाए। सो यू विल हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आप वो लेवल अचीव कर पा रहे हो या फिर नहीं। एक नॉर्मल क्लास में, एक बैच में हम बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक्स, बहुत सारी ट्रिक्स सिखाते हैं विच आर वेरी हेल्पफुल एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, ठीक है। तो ये चीज आपको खुद से इवैल्यूएट करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। यू विल हैव टू डिसाइड योरसेल्फ बाय लुकिंग एट योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऑल राइट, चलिए, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स का आंसर आया, मूनचाइल्ड एंड मंगल। ओके फाइन, 2 ही स्टूडेंट्स से क्वेश्चन का आंसर कर पाए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर। आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस लिखने हैं यहाँ पे। सो डिफरेंस इज 1, 4, 9 and 16. Now what are these numbers? 1, 4, 9 and 16. Tell me what are these numbers? Come on. So 1, 4, 9, 16 क्या है? These are perfect squares of the first 4 natural numbers. This is 1 square, this is 2 square, this is 3 square and this is 4 square. तो next क्या आना चाहिए? 5 square which is 25. So 41 में 25 add कर दो and you will get the answer as 66. All right, ठीक है। So perfect squares याद होंगे तो सारे questions बहुत easily solve हो जाएंगे, right? So 41 plus 5 square as correctly mentioned by Arvind, perfect. And Moonchild Mangal, your answers were correct, definitely correct, perfect, good. So these are certain logics that you need to remember. अब यहाँ पे अगर हमें perfect squares, perfect cubes याद नहीं होंगे तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे लॉजिक क्या यूज हो रहा है, या फिर हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आइडेंटिफाई करने में। अभी तो ये छोटे छोटे नंबर्स के स्क्वायर्स थे, अगर मैं थोड़े बड़े नंबर्स लिखना शुरू कर देता हूं, 441, 484, 529, 576, तो अगर आपको ये नहीं पता है कि these are the squares of 21, 22, 23 and 24, then it will take hell lot of time for you to identify the logic, ठीक है। तो इसीलिए 25 तक के स्क्वायर्स एंड 15 तक के क्यूब्स टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये लगता है ना कि नहीं यार स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने की जरूरत क्या है अगर पेपर में कैलकुलेटर है, तो नहीं यार, कैलकुलेटर ना आपकी स्पीड को बहुत स्लो कर देगा। ओके, दिस इज व्हाट यू डोंट वांट इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन सीरीज में अगर मैं बात करता हूं तो जिस तरीके से यहाँ पे सेम नंबर ऐड हो रहा है या फिर डिफरेंट नंबर्स ऐड हो रहे हैं, राइट, या फिर नंबर्स जो ऐड हो रहे हैं वो एक सीरीज बना रहे हैं, तो यहां पे एडिशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में सेम थिंग्स विल गेट मल्टीप्लाइड। ओके, सो एवरी नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, या फिर फर्स्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, देन मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 4, मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड सो ऑन, लॉजिक चलता जा रहा है, राइट। So this is how you will have to do these type of questions when it comes to number series, the concept of addition and multiplication, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, how to handle alphabetical series, right? अब number series और alphabetical series में as such कोई difference नहीं होता, right? Difference सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे numbers लिखे हैं और यहाँ पे alphabets लिखे हैं, तो आपको क्या करना है, अल्फाबेट्स को भी उनके नंबर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय नंबर इक्विवेलेंट ऑफ एन अल्फाबेट? सो वी हैव 26 अल्फाबेट्स, राइट, A, B, C, D and so on, X, Y and Z, ठीक है। Now A is the first alphabet, B is the second alphabet, C is third, D is fourth, X is 24, 25 and 26, right? So we will number these alphabets starting from 1 up till 26. Done? ठीक है, 26 numbers तक आ गया। तो अब alphabets को अगर उनके number equivalent में change कर दोगे, so numbers में convert हो गए and
you will have a question of number series. Done? ठीक है. अब आप मुझसे पूछोगे यार नंबर सीरीज में तो सर आप बहुत बड़े बड़े नंबर्स दे रहे थे, नंबर्स वर ग्रेटर देन 26, तो अब यहां पे कैसे करेंगे? अल्फाबेट्स तो 26 से बड़े नहीं हो सकते. सो आफ्टर 26 द सेम अल्फाबेट्स विल कीप ऑन रिपीटिंग इन द साइक्लिक ऑर्डर. इसका मतलब क्या है? 26 corresponds to Z. अब next number 27 will again correspond to A. B will correspond to 28. C will correspond to 29 and so on. Z will again correspond to 52. All right, ठीक है. अब 52 तक खत्म हो गया, 53 नेक्स्ट नंबर आया तो दोबारा से A लिख दो. A will correspond to 53. B will correspond to 54 and so on. Z will correspond to 78 and so on infinitely. ये चलता रहेगा. ठीक है, right? So it can be said that alphabet A का नंबर इक्विवेलेंट 1 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है और 53 भी हो सकता है, right? Similarly alphabet B can be 2, 28 और 54. अब हमें ये वाले तो नंबर्स याद कर पाएंगे हम बहुत इजीली. अब आप बोलोगे सर आप ये भी याद करवाओ, ये भी याद कराओ, अब ऐसे कब तक याद करेंगे? तो नहीं, सिर्फ आपको ये 26 अल्फाबेट्स याद करने हैं, इनके नंबर इक्विवेलेंट अप टू 26 याद रखना है, राइट? अब 1 से मैं 27 पे कैसे गया? प्लस 26 करके. तो ए अल्फाबेट का नंबर इक्विवेलेंट 1 है, तो उसमें 26 ऐड कर दो. 1 plus 26 is 27. So it can be 27 as well. 27 में दोबारा से 26 ऐड कर दो, 53 आ जाएगा and so on. 26, 26, 26 ऐड करते रहो. All right. So this is how you will be able to convert alphabets into their number equivalents or numbers into their alphabet equivalents to find out the final answer. All right, friends. So these are certain basics that you must know before you enter the questions of series. Done? ठीक है. अब जो भी अभी तक हमने सीखा है फिलहाल, let's have a look at the questions on that basis. Right? So this is the question in front of you. Have a look at this question and tell me what will be the answer of this one. Come on, go ahead. All right, nice. Okay. So let's understand the logic. The first number is 10, then 11. So 10 से 11 पे जाने के लिए plus 1 किया. Then the next number is 14. I've added 3. Next number is 19. We have added 5. Okay. And next number is 26. We have added 7. Okay. So plus 1, plus 3, plus 5 and plus 7. 1, 3, 5 and 7. Now what are these numbers? 1, 3, 5, 7. These are odd numbers, right? So the next odd number in the sequence will be 9. So I'll add 9 to the last term. 26 में 9 add कर देंगे and we'll get the answer. Okay, so 26 plus 9 कितना हो जाएगा? It will be 35. So 35, that is option C. 35, that is option C is the correct answer. ठीक है ना? Right? So I can see that almost all of you have given the correct answer. Let's move on to the next question. Next question.
अच्छा, साथ साथ लॉजिक भी लिखोगे आंसर के साथ साथ लॉजिक, व्हाट लॉजिक यू हैव अप्लाइड हियर। जैसे लास्ट केस में आपने आंसर लिखा, ब्रैकेट में आप लिख दो ऑड नंबर्स, ओके, लास्ट क्वेश्चन के लिए। सो इन द सिमिलर मैनर व्हाट इज हैपनिंग टू दिस क्वेश्चन। सो एक बार लॉजिक भी लिख दो। ऑलराइट, रेनू सेज इवन नंबर्स। ऑलराइट रेनू बट इवन नंबर्स तो नहीं दिख रहे मुझे यार यहाँ पे। सो आई थिंक कुछ गड़बड़ है, इवन नंबर्स तो नहीं ही है as I can see these numbers. Mangal says prime numbers. Okay, Mangal will check. चलो चेक करें। So 18 से 20 पे जाने के लिए we have added 2 plus 2. Then 20 से 23 we have added 3. Then we have added 5 and then we have added 7. Now 2, 3, 5 and 7. What type of numbers are these? Now these are not odd numbers. Odd numbers नहीं है ये। 3, 5, 7 odd numbers हैं, but 2 ने ना गड़बड़ कर दी। 2 is not an odd number. Again, like Renu said, even numbers. So Renu, even numbers भी नहीं है ये, definitely. हाँ? Now 2, 3, 5, 7, we have done this today. 2, 3, 5, 7, these are prime numbers. Okay? Prime numbers हैं 2, 3, 5 and 7 in increasing order starting from the smallest prime number. तो 7 के बाद कौन सा prime number आता है? It is 11. So the answer can be obtained by adding the next prime number which is 11. So 35 में 11 add कर दो and you will get 46 as your answer. So 46, option C is the correct answer. Okay, ठीक है? So these are prime numbers. Let's look at the next question. So next question on your screen थोड़ा सा अटपटा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन करना। ऑलराइट रौनक यार, बुक्स रिसीव्ड, कांग्रेचुलेशंस, नाइस। सो मैंने बोला था ना यार, सबको एक एक करके बुक्स मिल जाएंगी, डेफिनेटली मिलेंगी बुक्स। सो क्या होता है ना कि यार एरिया थोड़ा सा दूर होता है आपका, या सीक्वेंस में सबको रिसीव हो रही है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल सबको रिसीव हो ही जाएंगी। ओके, सो वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग कि अभी पेपर्स की वजह से, एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा गैप आ गया 8 to 10 डेज का। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, ठीक है यार, एग्जाम्स देखो, स्कूल के एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? स्कूल में हो या कॉलेज में हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग पैरेलली, वो वाले एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट है। बट मेक श्योर दैट बहुत बड़ा गैप ना आ जाए। ऑल्सो इफ पॉसिबल डोंट टेक कंप्लीट गैप। आप क्या कर सकते हो, एक दिन में हाफ एन आवर 45 मिनट्स निकाल के थोड़ा बहुत इन सब चीजों से टच में रह सकते हो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है? बट अदरवाइज ट्राई टू मिनिमाइज द गैप, एंड जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होते हैं, जैसे ही आप फ्री होते हो, तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के, थोड़े से एक्स्ट्रा आवर्स लगा के सारी चीजें रिवाइज कर लो जो आपने प्रीवियसली सॉल्व कर चुके हो, प्रीवियसली सीखी हैं, ठीक है? 3-4 दिन लगा के आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स मार के 10-10, 15-15 घंटे लगा के उन सब चीजों को रिवाइज कर लो। इन दैट केस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। सो अगेन यू आर सेइंग दैट यहां पे भी प्राइम नंबर्स का लॉजिक लग रहा है, चेक करते हैं। सो 143 से 126, राइट? सो यहां पे वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 143 से 126 आई कैन से दैट -17। सो फर्स्ट केस में -17, सेकेंड केस में -13, देन -11, yes, then -7 and then -5. All right. So -17, -13, 11, 7 and 5. I can see that all of them are prime numbers and they are prime numbers in decreasing order. तो अगर मैं 5 से स्टार्ट करता हूं तो 5, 7, 11, 13 and 17, now they are prime numbers in increasing order. तो 5 से छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 3, तो मैं -3 करूंगा एंड मेरा आंसर आ जाएगा। सो 90 - 3
87 should be the correct answer. Now this time it is option B. So option B definitely is the correct answer. Wonderful. Let's move on and look at a few more questions. Now find the missing term in this series. So एक term missing है, उसको find out करना है. अब again ये थोड़ा सा अलग logic है. This is a miscellaneous series. Okay? So miscellaneous series में क्या होगा? Addition, multiplication दोनों ही logic एक साथ combine होके आ सकते हैं. So have a look at this question and try to identify the answer. एंड आंसर के साथ साथ थोड़ा लॉजिक भी लिख देना. क्या हुआ गाइस, अटक गए? ऑल राइट, मंगल हैज गिवन द आंसर. नाइस. एंड डिफिकल्ट लॉजिक है फाइंड करना इसमें. ओके ओके, चलो. Now let's see if we can write a few things, a few logics. Not probably from the beginning, probably somewhere in the middle or towards the end. हाँ, जब भी लॉजिक आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा होता ना, तो थोड़ी जो बड़े नंबर्स है ना उनकी तरफ थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो. अब 198 से 205 बहुत सिंपल तरीके से जाया जा सकता है. कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. 198 को अगर मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 300 समथिंग 396 जाएगा. अब मुझे सिर्फ 205 पे जाना है 198 से, तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, +7 कर सकता हूं. दैट्स इट. ठीक है. नाउ 7 से 28 पे जाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट द बेस्ट वे इज मल्टीप्लाइड बाय 4. देन 4 से 7 पे जाने का +3 और यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 2. ना मैंने मल्टीप्लाई 2 लिखा, मैं +2 भी लिख सकता हूं. ठीक है. और यहां पे मल्टीप्लाई 2 या फिर +1. नाउ इफ यू लुक एट द नंबर्स दैट आई एम सर्कलिंग, ओके, सो +1 +2 +3 ये मैच हो रहा है. सो अगर +1 +2 +3 करता हूं तो नेक्स्ट में +4 होना चाहिए. ये कुछ अजबी कुछ नया ऐड हो गया है, बट यहां पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 4. ओके, सो +1 +2 +3 के बाद मल्टीप्लाई 4 हुआ है. So now in the questions of series you may find some cases where you are getting alternate series. So अगर मैं +1 multiply 2 +3 multiply 4 इन 4 नंबर्स को देखता हूं जो मैंने अभी येलो कलर से सर्कल किए हैं, तो कुछ सेंस बन रहा है. +1 multiply 2 +3 multiply 4. So 1 2 3 4 तो है, बट प्लस मल्टीप्लाई ऑल्टरनेट चल रहा है. तो if I'll continue this logic that I've circled with yellow color, what logic should fit in here in the missing term? 28 में क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्या नंबर होना चाहिए? Can you help me with that? +1 multiply 2 +3 multiply 4 follows first of all the plus sign, because plus multiply, तो यहां पे प्लस आना चाहिए. And then 1 2 3 4 it should be 5. ठीक है. So 28 plus 5 33. राइट. अब इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है या फिर नहीं. तो यहां पे अब मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए. 33 मल्टीप्लाई 6 क्या 198 होता है? यस, डेफिनेटली 198 होता है. इन दैट केस नाउ यू कैन मार्क योर आंसर एज 33. ऑल राइट. ठीक है. So friends, this is how we need to handle these questions in which one term from somewhere between these terms is missing.
ठीक है, ऑल राइट, समझ में आया। सो आंसर क्या हो गया? 33। एक और क्वेश्चन करते हैं, a question on alphabetical series. Alphabetical series. Be careful about this. All right, nice. Now, anything related to alphabetical series, it will be easier for you to determine the logic if you'll convert all these alphabets in their number equivalents. Number में convert कर दो, logic आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना? R is 18, then U is 21, X is 24. रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? X के बाद A आ गया, A का नंबर इक्विवेलेंट होता है 1, बट 24 के बाद 1, ये तो अटपटा है कुछ. A is equivalent to 1. Now A is also equivalent to 27. We have already seen that. तो अगर मैं 27 लिखता हूं तो लॉजिक कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली D is equivalent to 4, बट 4 में 26 ऐड कर दो, 30. सो 30 अगर लिख दिया तो लॉजिक कंटिन्यू हो जाएगा. अब सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है, नंबर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया तो +3 +3 +3 +3. तो नेक्स्ट डी में आपको +3 करना है. EFG आप इस तरीके से कर सकते हो. आप 30 में 3 ऐड करके 33 लिख सकते हो. 33 इज द नंबर इक्विवेलेंट. इससे मुझे अल्फाबेट पे जाना है तो -26 कर दो, 7 आ जाएगा. 7 का अल्फाबेट इक्विवेलेंट होता है G, वहां से आंसर आ जाएगा. या फिर 4 में आप 3 ऐड कर दो, डायरेक्टली 7 आ जाएगा, विच इज G. So the correct answer of this question is G. That is option C. All right, ठीक है, चलिए. Now do we have one more? Yes, we have one more question. So on your screen, जल्दी से देखो and try to find out the answer. Come on, tell me what is the correct option that will fit in between this series. All right, so Renu, which option? Renu, option A, B, C or D? All right, all right. Now, three students have given the answer, and all three of them have given the same answer: Karthik, Renu, and Mangal. Okay, once again,
अगर आप इन अल्फाबेट्स को ऑब्जर्व करते रहोगे तो आंसर नहीं आएगा. इट विल बी बेटर इफ यू विल कन्वर्ट देम इन देयर नंबर्स. नंबर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो. सो A is 1, G is 7, M is 13, I have a gap, and then 25. So 1713-25 हो क्या रहा है यहां पे? अगर मैंने सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंसिडर किया है इनका, ओके, सो 1713 यहां पे क्या हुआ है? +6, अगेन +6. सो 13 में प्लस 6 कंटिन्यू करके देखते हैं. 13 + 6 कितना आ जाएगा? 19, एंड 19 + 6 इज 25, राइट? तो लॉजिक तो फिट हो गया. तो 19 के इक्विवेलेंट क्या होता है? S. तो S शुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर. अब फॉर्चुनेटली S सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में है, ज्यादा ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है? बट दिस इज अगेन फॉर्चुनेट नहीं है, अनफॉर्चुनेट है. फॉर्चुनेटली अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन में होता ना तो मजा आ जाता. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकेंड पार्ट भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा. तो Z इज 26, T इज 20, यहां पे -6 हुआ है, ठीक है? नाउ N इज 14, अगेन -6 हुआ, तो 14 - 6 इट शुड बी 8, दैट मीन्स H. अब क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं. 8 - 6 इज 2, तो क्या मेरे पास B है? यस, आई हैव B. ऑलराइट, तो आंसर क्या होना चाहिए? SH. सो दिस शुड बी द आंसर. SH, दैट इज ऑप्शन B. ऑलराइट पीपल, यस. सो रेनू, फर्स्ट में हमने +6 किया एंड सेकेंड में हमने -6 किया. एब्सोल्युटली. एक और चीज देख सकते थे. आई एम जस्ट टेलिंग यू एक और लॉजिक जो कोडिंग डिकोडिंग में नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा यूज होगा. इसका नंबर 1, इसका नंबर 26, दोनों का सम कितना है? 27, ठीक है? इसका 7, इसका 20, दोनों का सम 27. इसका 13, इसका 14, सम इज 27. एवरीवेयर द सम इज 27, ठीक है? अब ये पर्टिकुलर थिंग जो अभी मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड रिवर्स अल्फाबेटिकल लॉजिक, राइट? बट ये यहां पे इतना यूज नहीं होता सीरीज के क्वेश्चंस में, ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है. तो अब ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट? एंड ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, राइट? I hope you all are doing enough amount of practice based on whatever you are learning in your classes. ठीक है ना? So guys, आज यहीं पे ही रुकते हैं. And before I'll go, some important information again for all of you. So guys, IPMAT 2025, we have a result celebration that is happening on 5th of July at 7 p.m. So all of you can catch us in this celebration where we'll be inviting our achievers from the last year, those who have secured places in some wonderful colleges like IIMs, right? And we'll be felicitating them, okay? So all these things will happen and you can join us on YouTube and be a part of this celebration at 7 p.m. on 5th of July. Now, this is not just the celebration, but there'll be some surprises for all of you as well, all the students who are preparing with us in IPMAT 2026. All right. So friends, that's all from my side. Thank you very much. Thank you for being a part of this session. Have a wonderful journey towards IPMAT examination. All the very best. Good night. Bye-bye. Renu, the next class will be in the next week, right? Same day, same time. All right.